मिडिल क्लास फैमिली रो बिलोंग करके गोटे बिजनेस सेटअप करबा माइंडसेट कोठु आसिला भुवनेश्वर भलिया जगह रे बा ओडिशा भलिया जगह रे जतले हमें छुआटे बेले जतले हमें 10th क्लास बा से स्कूलिंग समय रे हमर गोटे लक्ष्य थाए भलो पढिबा आउ गोटे भलो चाकरीटे करिबा छुआ बेले मु स्वप्न देखे किछि स्पेस बही पढ़ी कि मु भाबे जे मु कोन रॉकेट गोटे बनै परिबी कि कि सेते बेलर ओडिशा एबेर ओडिशा देखछन स्टार्टअप कल्चर रे किछि फरक आसी ना केमति सिग्निफिकेंटली आसी मते बॉम्बे रे जतले पचारंती हे सिबासिस तम घर कोठी मु कहे भुवनेश्वर रे तो द नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन वाज भुवनेश्वर कोठी आज मु सबटु बेसी क्रेडिट दिए मु आज जहाँ भी अछि बिकॉज ऑफ दैट कल्चरल और माइंडसेट ऑफ बॉम्बे पीपल जदि ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम को अपन देखंती ता डिमांड को अपन केमति डील करंती यू आर a real CEO of a company of or a startup when you are fireable जदि बुकिंग जिनी स्टार्ट करथले इनिशियल डेज रे कोन चैलेंजेस देखिथिले but when you are creating a disruption स्टेटस को जतले चैलेंज करूचो सेतेबेले गोटे मु कहबी जे स्टार्टअप एटा अपन पहले 10th पास करना थिले अपन ताको हेड ऑफ द एआई हे गेले सिस्टर अपन केमिति ताको चूज करले प्राय पिला निजे ही पई अप्लाई करथले दोज वर रिजेक्ट बिकॉज़ से माने लिंक्डइन रे अथले मोर मेन क्राइटेरिया थिबो जे तांकर सर्टिफिकेट नथिबो कि लिंक्डइन रे भी प्रोफाइल नथिबो अपन के हिसाब रे सर्टिफिकेट सेते इंपोर्टेंट नहो गोटे हायरिंग कल्चर रे मते लागुची जे एटी कन्वेंशनल एजुकेशन काम दबो राइट आपण जानि जंदी धीरू भाई अंबानी होंतु कि स्टीव जॉब्स होंतु ए माने सब हाईली सक्सेसफुल लोक ड्रॉप आउट्स जदि आपण का हिसाब रे आपण कोन देखु चंदी ओडिसा रे को बिजनेस एबे बूम करबा को जाउछ गुडाए बुक्स बा गुडाए बायोग्राफी आपण सक्सेसफुल पीपल रो लोक कर देखिबे अपॉर्चुनिटी तांको को आसी नथिला तांको पाको रादर बड़ बड़ फेल्यूर आस्तिला किंतु एबे जदि हम देखिबा यूथ मानकर भी टिके जॉब एस्पिरेशंस किबा निजर एस्पिरेशन करियर एस्पिरेशन कहबे टिके सेगमेंट चेंज हो गई आगुर बहुत जॉब ओरिएंटेड थिले एबे चाहू जे हम निजर किछ करबो निजर गोटे बिजनेस डेवलप करबो जदि जने जरा बिजनेस बैकग्राउंड अछि त पई हुई तो गोटे रोड मैप अछि से जाई परबो कि जा बकरी किछ बिजनेस बैकग्राउंड नाही जेमते मु स्टार्टिंग रो कहितली जे मिडिल क्लास फैमिली रो किबा बिलो मिडिल क्लास फैमिली रो आछथि तांको पई जदि आपण गोटे रोड मैप कहिबे जो सक्सेस टा हम आज देखुछु ता पछरे 8-10 वर्षर हार्ड वर्क रहिछि ही रहिछि 10 मिनिट रे जदि हमर चिप्स पैकेट आसी करूछि बा फूड आसी करूछि तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रे बंचिछु जदि हम गोटे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डेली हैबिट्स जानिबा को चाहिबो आपणकर कोन थाय मु देखिछि सब बायोग्राफी जे कोनसी बायोग्राफी आपण पढंतु सब सक्सेसफुल लोकंकर एई तीनटा हैबिट डेफिनेटली अछि तो आइदर सक्सेसफुल लोकंकर एई हैबिट अछि नले सक्सेसफुल हबा पई एई हैबिट करिया पड़े नमस्कार शिवाशिष जी बेस्ट इन ओडिसा को आपन को स्वागत थैंक यू केमति अछंती बहुत बढ़िया आई एम एक्साइटेड टू बी हियर एंड आपन को पॉडकास्ट रे पार्टिसिपेट करियो थैंक यू जेमते कहले हमें को भी गोल अचीव करंती लाइफ रे कोठी भी हमें पहुंचंती गोटे इच्छा रू ही जिनसटा सृष्टि होई थाए गोटे मु जेते की जानची अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज आपन गोटे मिडिल क्लास फैमिली रो बिलोंग करथिले मिडिल क्लास फैमिली रो बिलोंग करके गोटे बिजनेस सेटअप करबा माइंडसेट कोठु आसिला इच्छाटा कोठु आसिला आई थिंक यार गोटे पर्टिकुलर टाइमलाइन न थाई पारे माने गोटे पर्टिकुलर इवेंट एमती किछि नथिबो जे मु एते बड़ जिंसटे करि परिबी बा भाबी परिबी a series of events like for example chua bele looking at certain people in our society and out of society various travel jiba bele chua bele mu swapna dekhe kiछि स्पेस बही पढ़ी कि मु भाबे जे मु कोन रॉकेट गोटे बनै परिबी कि सो एई सब छोट छोट स्वप्न देखि कि फाइनली से इमेजिनेशन टा को गोटे रूप दबा पई गुडाई जिंस आमे करिथौ तो मु जदी कहिबी भुवनेश्वर भलिया जगह रे बा ओडिशा भलिया जगह रे जतबेले आमे छुआटे बेले जतबेले आमे 10th क्लास बा से स्कूलिंग समय रे हमर गोटे लक्ष्य थाए भलो पढिबा आ गोटे भलो चाकरीटे करिबा आई मीन मिडिल क्लास फैमिली रो सेटा बेसी थाए सो आमे मोस्टली चारिटा जिंस को भलो पढिबा भलो स्कूल को जिबा भलो चाकरी करिबा घरटे करिबा देन सेटल हे जिबा काइंड ऑफ
बट फर्स्ट टाइम मोर जो लुकिंग एट ए लार्ज सिटी वाज एक्चुअली इन गुरगांव जेतेबेले मु एमबीए करूथली एंड समर करंती हमर गोटे प्रोजेक्ट हुए सेतेबेले मु जी रे जाई समर प्रोजेक्ट गोटे करथली गुरगांव रे दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सी ए लार्ज मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग स्वाइप वाला एक्सेस कार्ड सीईओ रो डेफिनेशन फर्स्ट मु देखिली जे मु भाबुथली सीईओ होची गोटे लोक जे बसिथिबो तार सराउंडेड बाय हेल्पिंग हैंड्स एंड तार इशारा रे माने लोक नाचुथबे एंड ऑल बट देयर आई सॉ ए सीईओ हु इज सिटिंग देयर तार फोटोकॉपी करियो हेले से निजे जाई कि फोटोकॉपी नै कि आछी दैट कल्चरल जिंस की सीईओ इवन जीरो सीईओ इज ए it's a unimaginable unthinkable wealth at his disposal but this kind of humble culture and this kind of looking at those kind of large buildings large people coming in and out of the office so you think that mu kon emti gote kichi create kari paribi first thought asbe mu emti jagare काम kari paribi satere and तापर जेते काम करबा को आरंभ कलु सेमती जगह रे जोटा मोर फर्स्ट job was in Bombay as in one of the largest bank in India management trainee he ki join kolu se etu prati barsha promotion pai ki mane end up with a vice president role sette bele ame kahilu mane bhabiya ku chesta kolu je kon nije kari paribu ki emti kichi jinsa so just to answer there is not a significant movement ki jo thre ki mu bhabithibi je emti kichi bada dharanor kari hei jeytiba but there are series of events I mean which of course we will delve upon while we talk and semti who and right rakam ro mentors milile right time right rakam ro team players but team theory hela dhire dhire bahut misfit thile bahut fit thile so it was all A/B testing and here we are where we are today. किंतु आपण जॉब करतले आपण जॉब केते वर्ष करथिले जॉब मु 10 वर्ष जॉब करिछि माने 2000 माने एमबीए कला परे 2001 रु सीधा नै कि 2010 11 पर्यंत मु जॉब करिछि आपण जेमति कहले गोटे सीरीज ऑफ इवेंट थिला गोटे प्रोसेस थिला बिजनेस स्टार्ट करबे रे किंतु मिडिल क्लास फैमिली जने पर्सन जेते बिजनेस स्टार्ट करे कथा भाबे बहुत सारा इनसिक्योरिटीज आसे एब्सोल्युटली लाइक मोर फाइनेंस को नै कि हो और बिजनेस बैकग्राउंड नै मो पाखरे प्रॉपर रोड मैप नै से जो गोटे टाइम में से गोटे करेज नै भी आबेटा स्टार्ट करी से करेज ता केबे आस्तेला अब केमिति जिंसटा स्टार्ट हैला हां सेटा भाबिला बेलु को ही मते बहुत एक्साइटिंग नॉस्टैल्जिक लागुची से पॉइंट है so let me quickly share with you like Bombay helm of affairs hustle आज मु सबुठु बेसी क्रेडिट दिए मु आज जहाँ भी अच्छी बिकॉज ऑफ दैट कल्चरल और माइंडसेट ऑफ बॉम्बे पीपल कहीं ना सेठी गोटे टाइम रो वैल्यू थाए समस्त पाखे आई वाज वन पॉइंट इन टाइम मु बॉम्बे रो हार्ट जोटा दलाल स्ट्रीट माने मु फोर्ट ब्रांच रे आई वाज हेड ऑफ फोर्ट ब्रांच वन पॉइंट इन टाइम एंड बाहर को आसिले यू सी दैट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग राइट सो and everybody is hustling there कहा पाखरे समस्त पाखरे समय अच्छी समस्त पाखरे समय नाही समय अच्छी कौन पे जदि किसी वैल्यू ऐड करूछ तमे हमर जो परस्पर भितर जदि कथावार्ता होउछु सो समस्त कहबे मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए and they would also expect some value being reciprocated also even if you speak गोटे ठेला वाला संगे भी कथा हो गोटे सैंडविच वाला संगे भी कथा हो सेठी they will be all hustling around कि कौन करा जाय परियो what's the next idea they are talking about may it be small or big right so एठू माने जदी हमें जो वेरियस स्टेजेस कथा कहबा एठू आरंभ होइतिला माने कि how important people are like coming from this eastern part of the country where job is the only thing सेठी मु देखिली गोटे opportunity अछि entrepreneurship बोली कि and मोर सब clientele base को माने मु suppose banker and I'm top banker today मोर सब client माने निज निजर business रे अछंती so mostly I'm not managing salaries of people I'm always managing wealth of other entrepreneurs and तांको संगरे सेही proximity टा probably मते entice करिथिबो कि मु से सीट रे बस परिबी कि right so let's say imagine मोर गोटे important event मने पडुची बा मीटिंग मने पडुची सिंटेक्स रो एमडी संगरे मोर देखा होतला
so imagine କରନ୍ତୁ ସେ Syntax is one of those time was one of the जो overhead tank so तार account ଆମେ manage କରୁଥିଲୁ so imagine ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖା କରୁଛୁ and he is saying something his behavior his the way he is creating wealth for others ଆମେ ଏଟା ପାଠରେ ପଢିଥିଲୁ ଗୋଟେ CEO ର ରୋଲ ହଉଛି to create wealth and to distribute wealth ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି କି ମୁଁ ଜଣେ CEO ପାଖରେ ବସିଛି ବା MD ପାଖରେ ବସିଛି ଆଉ ସିଏ ବି ତା ବିଜନେସ ଟାକୁ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି 500 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଛି and how the ecosystem around him has grown right so let's say diamond merchant ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହଉଛି ଗୋଟେ movie maker ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହଉଛି so they all are creating wealth and also not creating wealth for themselves but for their investors and the stakeholders also so it a first incident जोगुडा मते धीरे धीरे कहला कि चाकरी beyond something is there second was building was something that was in my DNA like even if I was in a job ICICI days कथा कहूची मु जतले चाकरी भी करूथली I was not like looking at job like a job I was looking how because सब job रो गोटे SOP थाए I was always trying to go beyond that SOP and that was the reason I was first time एमती हला मो संगे गोटे award मते मिलिला ICICI रू that was called entrepreneur of the year right so मु बुझी जानी भी नथली entrepreneur कौन कहंती जतले मते केवी कामत संगे जे मीटिंग हो तो मते जतले ब्रीफिंग करा गला जे entrepreneur माने कोन तो entrepreneur माने जे ऑर्गेनाइजेशन भितरे रही कि गोटे entrepreneur रकम बिहेव करिवो माने रिस्क नै कि गोटे अलगा रकम काम करि परिवो समथिंग डिफरेंट which your processes or policy does not fit and करी कि किछि बढ़िया रिजल्ट सिग्निफिकेंट क्वांटम रिजल्ट पाई परला लिनियर रिजल्ट नो तो ताको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर को हुए तो मु देखिली जदि मु भितरे रही कि एमती करि पारुची समथिंग डिस्ट्रप्टिव एंड ऑल बिकॉज आई रिमेंबर दोस डेज सेतेबेले आईसीआईसीआई रे हमें these were internet days kind of just entering to the .com days and एते adoption नथिला banking system रे सेतेबेले हमें जेतेबेले prospecting suspecting एटा सब sales कथा कहउथुलु सेतेबेले हमें खाली यूज करथुलु फोन रे कॉल करिबा हम टीम कॉल करथुले तो मु without anybody's permission I started emailing people and sending bulk faxes सेतेबेले होउथुला and all this thing which was unthought of I mean we experimented with that and we got significant success through that so seithi pai something disruptive we thought so building started from there and then probably little later on सांगो साथी मान संगे एमती ड्राइंग रूम रे डिस्कशन हुए कि अरे कौन गोटे निजर करिबा बिकॉज स्टार्टअप वर्ड सेतेबेले नथिला कैन वी डू समथिंग ऑफ आवर ओन वाज द क्लिशे so एमती करू then I think lot of mentors showed up people who left their job I didn't meet them directly though but I've seen them आ गोटे significant event हला मोर जेतेबेले केवी कामंत कर गोटे बहुत भलो सांग होचंती नारायण मूर्ति तो केवी कामंत संगे हमें सेकंड डाउन रे काम करू and he had invited for some board meeting to BKC जोटा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स रे आम हेड ऑफिस थाए and I had a chance to listen to him I didn't meet him or talk to him listen to him and I was curious fascinated I read lot of things blog तांको बही एगुड़ा सब पढ़िली तांकर जर्नी of from service केमिति से engineering काम करथुले then how he went to explore in Russian territories how he was put into jail train journey and all this communism thought process and how he dared to make a 10,000 rupees रे Infosys को तैयारी करले सही Infosys जोटा कि हमें बिजनेस स्कूल रे केस स्टडी हिसाब रे पढुथुलु जेतेले Infosys was one of the first company to listed in Nasdaq BSE रे हे जाइतले न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज रे लिस्टिंग हला अराउंड 2000 बेलु सेतेले हमें MBA रे केस स्टडी पढुथुलु एंड सेही लोक को मु आज देखुची सामना रे राइट सो that was inspiration like I have never seen that person now these kind of I could say small beautiful accidents that happened they paved the way ki to take a final decision ki mu bhi kari paribi
ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବ୍ରିଫଲି କହିବି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପର୍ସନ୍ସକୁ ଦେଖିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା କି ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରିବି ଆଉ କରିବାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ଯଦି ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଏବେର ଓଡ଼ିଶା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କଲଚରରେ କିଛି ଫରକ ଆସିଛି ନା ସେମିତି ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟଲି ଆସିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ରିସ୍କ ଆଇ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ତ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଗଲି ମାନେ ଜାଣିଥିଲି ଯଦିଓ ବଟ୍ ଦ ନୁଆନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଆଇ ଡିଡଣ୍ଟ ନୋ ତ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଡିସିଜନ୍ ନେବାକୁ ହେଲା ଯେ କମ୍ପାନୀଟା କୋଉଠି କରିବି ସୋ ଆଇ ୱାଜ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଅର୍ ଆର୍ଓସି ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଓସି ଅଛି ତ ମୋର କମ୍ପେଲିଂ ଡିସିଜନ୍ ଥିଲା ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବିନି ସୋ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୋର ସୋ କଲ୍ଡ ନିଜର କଲି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବିନି କାହିଁକି ନା ଆଇ ୱିଲ୍ ସେୟାର ଦ ରିଜନ୍ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଟା କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର କାହିଁକି ନା ମତେ ବମ୍ବେରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ହେ ଶିବାଶିଷ ତମ ଘର କୋଉଠି ମୁଁ କହେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଦ ନେକ୍ସଟ ଫଲୋ ଅପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱାଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଠି and I am talking about 2008, 9, 10 এই সময়ের তো it was difficult to tell them that Bhubaneswar, Calcutta জানিছো কি Hyderabad জানিছো কি সেই মঝামঝি জায়গায় Bhubaneswar so it was and I don't know where they were geographically poor or Bhubaneswar was not known but this was the case and therefore I had out of inferiority complex I said ki my business should be in Bangalore because Bangalore was happening, bustling. I used to travel to Bangalore for my corporate career and I saw Bangalore business bhalo karuchanti IT services Infosys basically was Bangalore and Narayan Murthy was my inspiration so all this matched and I said Bangalore Electronic City should be my first place to do so therefore I started in Bangalore but ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଯେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ BookingJini ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୱେଲ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର କମ୍ପାନୀ 5 ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ୱି ଏକ୍ଜିଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ଗୋଟେ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି କମ୍ପାନୀ ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଓଭର ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ହ୍ୟାଡ୍ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ କମ୍ପାନୀ BookingJini କୁ ଆସିଲୁ ଆମେ ଆଇ ଡିଡଣ୍ଟ thought about second time I said this time it will be on Bhubaneswar and this company is registered in ROC Cuttack. Thought process re difference केमते आसी गला so technology evolve he jaithila cloud system asi jaithila so it doesn't matter where from you are creating a company because your customer is now global for example more first customer hi asithibe dharantu Himachal Pradesh ru more maybe 100 customer vitare dita khande customer asithibe Singapore ru right so it does not so technology is trustable if you can exhibit आमे जदि देखै पारले जे आमे तुमको वैल्यू दे पारुछु एज अ कस्टमर को आमे वैल्यू दे पारुछु दे डोंट केयर टू कम टू योर ऑफिस तो आजिर डेट रे आमे मोर देन 7000 clients are there for BookingJini but we would not have visited 6800 client को आमे विजिट करनथि so they would have come through a website taken a demo and paid us and use our product fast forward 10 years pare jetale mu bhabili je nai agote company karibar achi so I never thought twice ki Bhubaneswar re kari haboni first apna mention kale BookingJini ro founder apana jodi ame BookingJini katha bhabiba apna kemini bhabile ki mate एई बिजनेस करिवार अछि ओ BookingJini रो विजन कोन थिला फर्स्ट रो मु टिके एठु पछकु जिबे गोटे स्टार्टअप कोन मु भी जान नथली जेतले मु कहिली आपन को जेतले फर्स्ट टाइम मु जेतले मोर समथिंग ऑफ माय ओन जो सो कॉल्ड समथिंग ऑफ माय ओन बा बिजनेस करिवा बोली भाबी कि जेतले प्रथम कंपनी आरंभ करथिली 2011 रे सेतले मु जान नथली स्टार्टअप माने कोन स्टार्टअप मु जेतले सिलिकॉन वैली गली बिकॉज़ मोर सेही कंपनी रो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स वेयर इन कैलिफोर्निया लाइक बे एरिया जो सिलिकॉन वैली को यूएस रो सो प्रति वर्ष 2 मास खंडे मु जाई कि सेठी बिजनेस डेवलपमेंट पई जाए सेठी मु जानिले जे एक्चुअली स्टार्टअप कोन सो मोर फेवरेट डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप इज यू नो पीटर थिल रो डेफिनेशन इज the larger problem you are solving and the larger amount of people you can convince to solve that larger problem so technically ame gote kon problem solve kurchu society pai
आउ इनोवेशन वे रे कोन करूछु सो माने सो वी कैन स्पीक ऑन एंड ऑन दैट बट से जो स्टार्टअप जिनसटा को आसीबे को हेले तो मु जते बेले प्रॉब्लम टा कोन सॉल्व करूची BookingJini दैट इज इंपोर्टेंट बिफोर आई गेट इनटू द कंपनी सो मु जते जाई कि रहे यूएस रे मोर के सांग साथी बा रिलेटिव्स नाहंती भुवनेश्वर सो मु छोटो होटल बाछि कि रहे एंड लॉन्ग टर्म जते रहे माने इमेजिन करंतु 60 दिन आपण होटल रहउचंती बा 45 दिन रहउचंती होटल रे आई हॉप बिटवीन होटल्स बिकॉज मोर कस्टमर माने केतले सनीवेल रे अछंती केतले सैनोजोए रे केतले फ्रीमंट रे ए भलिया जगह रे सेमन सब रहिथांती तो मु पाख जो होटल हबो बाछि कि booking.com गोटे वेबसाइट आपण जानिथिबे सेइठु जाई कि बुक करे तो ना मोर जेहेतु पैसा बंचे पे मु $60 राती $50 राती को एमती सब माने रेंट बाछि कि बुक करे आउ एमिति हला कि जेहेतु वर्ष पर वर्ष एवरी ईयर आई एम गोइंग सो मोस्ट ऑफ द टाइम सेही होटल रे मु रहउची बिकॉज मु जानी गलेनी से एनवायरनमेंट ता स्टेयर के से एठी तार एटा हमको सा लोकटा से है तो गोटे होटल वाला मते थरे कहिले एटा बहुत इंपोर्टेंट मोमेंट मो लागि थिला जे मिस्टर शिबाशिष डोंट बुक थ्रू booking.com next time when you come you are always booking through booking.com next time when you come this is my email id you email me and not only that I will not only keep your reservation but also give you a 20% discount so mu tama reservation rakhibi to 100% कि तमे जो दिन आसीबो तम लगे रूम थिबो बट booking.com रे जो प्राइस देखौची ताठू 20% डिस्काउंट देबी अब यूएस रे सेही समय रे गोटे डिस्काउंट मिलिबा वाज अनप्रेसिडेंटेड अनथिंकेबल तो मु मोर नेक्स्ट क्वेश्चन थिला जे केमती करूछ एगुडा सब then I was introduced to this business model called online travel agents or OTA booking.com ho ki Expedia ho India re make my trip Agoda clear trip गुडाई अछंती hundreds of them तो मोर सेते बेले गोटे देखिली जे गोटे होटल रो प्रॉब्लम होउची जे कस्टमर जदी $100 स्पेंड करूची एई भलिया प्लेटफॉर्म रे होटेलियर को मिलुची जमा 70 रु $80 ता माने 30% कमिशन से माने नौचंती होटल फॉर एवरी बुकिंग दैट दे गिव एंड होटल ए विषय किछि कहूनी काई ना इट्स ए फ्रेमिनी सिचुएशन एक रे ताठू बुकिंग से चाहूची दुई रे चाहूनी भी मते एते कमिशन दवा को पड़िबो बुकिंग पे तो BookingJini देखिला जे एई होटल रो से प्रॉब्लम अछि मु जतले आउ गोटे होटल को जाई कि मो आडू पचारली ताकू तमे एम्ति प्रॉब्लम फेस करू देखले हां यूएस कथा कहूची जतले इंडिया को आसिली इंडिया रे भी व्हेन आई यूज्ड टू मूव अराउंड friends and then I did little of market research I found out problem is even bigger here like separate जदी 20 रु 30% कमिशन एठी 30 रु 40% कमिशन नउचंती सो मु सेतिक बेले गोटे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तयारी करी के हम मार्केट को गलु एंड 100 खंडे होटल यूज करले त से प्रोडक्ट को एंड आई रिमेंबर 50 जन पैसा दौ थांती आ 50 जन दौ न थांती बिकॉज़ दे वर लार्ज होटल आमे भी कहलु जस्ट यूज करके देखो इफ इट एड्स वैल्यू टू यू एंड इट एडेड वैल्यू सो दैट वाज द हाउ BookingJini स्टार्टेड with a curiosity aschi BookingJini नाटा कोठ आसिला yeah that's an interesting question so एमिति किछि हेइनी तो आमे कहलु गोटे ना खोजुतलु एई माने मो मने अछि हमर ए जो एक्सएम कॉलेज सामना रे जो सीसीडी मु आ मो कलीग केत जण बसी कि हमें जस्ट ना बाचतलु लैपटॉप रे थिला एंड बुकिंग सॉफ्टवेयर बोली हमें भाबितलु बुकिंग जे वर्डटा रहबो जिनी एमती कथा हो जोड़ी गला काहे ना जिनी विश फुलफिल द विशेस ऑफ पीपल ऑफ होटल्स बेसिकली फॉर अस एंड आउरी भी एमती गुडाई ना आस्थिला बट .com ता यार अवेलेबल थिला तो एमती किछि माने आमे एते किछि माने भाबिनु से विषय बट हाइंडसाइट रे देखिया गले इट वाज अ ग्रेट नेम दैट वी चूज्ड एंड ब्रांड वाइज बहुत बड़ कॉल रिकॉल ब्रांड रिकॉल जो कहंती होटल मानक संगे बहुत भलो की हेछि जदि ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम को अपन देखंती ता डिमांड को अपन केमिति डील करंती सो को ऑनलाइन माने हमर प्रोडक्ट कथा कहउचंती ना ऑनलाइन रे बुकिंग नहीं आपन को प्रोडक्ट कथा BookingJini रे देखो द मार्केट इज इन इंडिया हमर जो सेगमेंट हम होटल को हमर टारगेट सेगमेंट्स आर नॉट हिल्टन्स और मैरियट्स
आमे को टार्गेट आमे को माने हमको चाहिए हमर प्रोडक्ट यूज करे पे स्मॉल एंड मीडियम स्केल होटल धरंतु भुवनेश्वर कथा कहबे आमे hotels like Sandy Tower, hotel like Mayfair, hotel like Sheetal, and loads of them. So Empire Hotel, so these are our target segment hotel. जो मैंने boutique, small or small chain of hotel. तांकर माने सेही माने टिके unfragmented. तांकर निजर गोटे विराट बड़ ब्रांड पुल नहीं. So people will hesitate to go to their own website and book, right? So and they will be not visible also. Kahi na Google re aji normally buying behavior of a person is Google को जिबा मु धरंतु आपण आजी पुणे जिबा को चाहउछंती तो आपण कोन करियो Google जिबा पुणे माने बजेट होटल और रिसोर्ट इन पुणे एई टाइप रो सर्च करिवे द प्रथम जो रिजल्ट गुडा आसीबो सेगुडा booking.com आसीबो नले मेक माय ट्रिप आसीबो और आपनकर निजर गोटे फेवरेट ऐप थिबो मेक माय ट्रिप नले बुकिंग गो आई बीबो ए रकम गोटे ऐप थिबो आपण सर्च करिवे नाउ बाइंग बिहेवियर ऑफ इंडियन कंज्यूमर आर व्हेन यू जीरो डाउन ऑन ए होटल लेट्स से आपन को गोटे क्राउन प्लाजा बोली गोटे होटल पसंद लागिला आपण बजेट रे आछि एंड ऑल दैट एवरीथिंग फिट्स सो 80% ऑफ दिस ट्रैवलर से माने जाई कि आउ थरे सर्च करूचंती क्राउन प्लाजा रो वेबसाइट को तार रेटिंग देखुचंती गूगल रे बिफोर बुकिंग तार किछटा यूजर रिव्यू देखुचंती बिफोर बुकिंग बिकॉज दे फर्स्ट टाइम गोइंग नाउ वी कैप्चर देम हियर रादर देन इन ओटीए जदी गोटे प्राइस जर मेक माय ट्रिप रे गोटे प्राइसिंग रे 4000 टंका रे से होटल बिकुची नाउ यू टेल मी होटल ओनर आपन को चीपेस्ट प्राइस दे परिबो ना गोटे मिडिल मैन दे परिबो एजेंट बेस्ट प्राइस दे परिबो ना प्रोड्यूसर बेस्ट प्राइस दे परिबो ऑफ कोर्स द आंसर इज प्रोड्यूसर सो इमेजिन सेही जो प्रोड्यूसर पाखु को किंतु ए बायर जाई पारुनी तो हमर एंटायर इंजन हैज बीन सो ट्रेन्ड एंड बीन बिल्ड सो दैट प्रोड्यूसर संगे हमें डायरेक्टली कनेक्ट करि परिबो बुकर को सो दैट्स हाउ वी क्रिएट डिमांड ऑन द होटल्स ओन चैनल्स मु आपनकर टेडेक्स टॉक देखुथिली सेतेबेले देखिली कि 2020 रे कोरोना आसी गला सेतेबेले सब किछि लॉकडाउन हे गेला सेतेबेले आपन बिजनेस जीरो हे गेला तापर पनि रिस्टार्ट करले कोन थिला सेटा केमति थिला सेटा तो माने इट्स लाइक ए बैड ड्रीम दैट वी वांट टू ऑलवेज फॉरगेट बट या सो कोरो आई मीन जस्ट गोटे बड़ फंड रेज करिथाउ इनफैक्ट मु बहुत इमैक्युरेटली मन अच्छी बहुत बढ़िया फंड रेज करिथाउ वी हायर्ड ऑलमोस्ट 50 हमर जहा टीम साइज थिला ताटू डबल टीम साइज हायर कर देथिलु दिस वाज मंथ ऑफ जनवरी 2020 जस्ट 3 months बिफोर कोरोना हिट तापरे हमें तांको इंडक्शन करके प्रति स्टेट रे हमर पिला माने एम्प्लॉइज माने सब ऑनबोर्डेड ही जाइथिले वी आर ऑल सेट लाइक एवरीथिंग वाज लाइक वी फेल्ट दैट we would be $100 million company in next 3 years time. So that was the euphoric stage we were into. Products were built and everything. And then suddenly we felt like we were hit by a train. This was 25th of March 2020, right, when lockdown was announced. Ame janinu how to handle this as a team. Mo investor भी जानी नाहंती कौन कहिबे को कहिबे. But thanks to all those investors, I think everybody called me up in the next 45 days time. Everybody were talking to me, hey Sibasish, don't know आमे भी जानिनु एटा को केमिति navigate करिवे को छै जो unprecedented word was highly used that time. ए unprecedented time को आमे भी जानिनु केमिति navigate करिवो, but trust us Sibasish, we are there with you. I mean we stand by you and with your team also. And then we had a great team. सेही समय रे मो टीम भी मो संगे ठिया आइतिला माने आमे चाहिलु कैश को केते कंजर्व करि परिबो केमिति ए जो परिस्थितिटा पळेबो आमे सब दिन भाबु कि आउ 2 मास भितर बंद हेजो आउ 3 मास भितर बंद हेजो माने ओपन अप हेजो सब बट इट डिडंट हैपन सो माय टीम मेंबर वेयर देयर लाइक मेनी ऑफ देम आर यंगस्टर्स मेनी ऑफ द पेरेंट्स आर स्टिल वर्किंग सो से माने कहले आमे सैलरी नबुनी सो मेनी ऑफ देम जहार गोटे EMI थिला ऑलरेडी दे हैव फैमिली दे सेड कि वेल यू आर गिविंग ए लेट्स से
1,20,000 टका दरमा पाउछु मोर किंतु ईएमआई होउची 33,000 टका मते आगे 35,000 टका दियंतु मु चळै देबी सो एई टाइप रो गुटे टुगेदरनेस केम इन and therefore we thrived entire covid post covid again we very fast went तो आमे बुकिंग जिनी एक्चुअली दुई थर जन्म होइछि गोटे होउची 2018 मसिया रे आ गोटे होउची 2020 सेप्टेम्बर बेलको फ्रॉम आजिर जहा ग्रोथ देखुछु आमे ए 3 वर्ष रो ग्रोथ कंसीडर करछन 2020 सेप्टेम्बर इतो बहुत बड़ा चैलेंजेस कथा हम कथा हेले गोटे अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हे गेला हमें कहि परिबा किन जदि हमें जेतोरा आपण बुकिंग जेनी स्टार्ट करथिले आज स्टार्टअप आपण तो क्वेश्चन स्टार्टअप कहंदिनी मु फर्स्ट सेटा जानिबे आपण स्टार्टअप काहे की कहंदिनी करेक्ट सो जेतोले मु स्टार्टअप प्रथम बिजनेस ता जेतोले करथली बट ए बुकिंग जेनी को मु डेफिनेटली स्टार्टअप बोली कहबी प्रथम बिजनेस ता वाज एक्चुअली सर्विस बिजनेस सर्विस कोन ना मु गोटे आउटसोर्सिंग बिजनेस रे अछि तो मो मतरे सेटा गोटे स्टार्टअप नुह आउ तमे इन्वेस्टमेंट रेज करिन तमे यू आर द ओनर ऑफ द सो कॉल्ड जो मालिक कहंती ऑफ द कंपनी and so forth so startup is only when you are creating a disruption startup is only when in my opinion again I mean people can differ with me but when you are creating a disruption status quo को जतले चैलेंज करूछो सेतेबेले गोटे मु कहबी जे स्टार्टअप एटा आ तम लाइफस्टाइल चलोनो सेतरे माने लाइफस्टाइल बिजनेस इज नॉट ए स्टार्टअप इन माय ओपिनियन अगेन केतरा जिंसो मोटी कहबे रखा रहउछ सपोज मते नॉर्मली आई एम द बहुत लोग को माने I am the founder and CEO of the company. Now, founder of the company मु जीवन सारा रहिबी but CEO of the company रहिबी कि नहीं मु जानिनी because tomorrow my this booking journey can pivot into certain other things where I may not be the right person to be the chief executive officer of this company and मते जने बहुत established ଆଉ बहुत successful founder कहिथिले and बहुत आडू सुनिछि भी जिंस you are a real CEO of a company of a startup when you are fireable तमको जदि तम कंपनी रो केही बोर्ड जदि बाहर करि पारिबनी बा फायरेबल पोजीशन रे तमे जदि ना बाहर करिबनी दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि यू आर डूइंग ग्रेट देयरफॉर बाहर करि पारिबनी जदि बाहर करबा पोजीशन रे तमे ना हो देन यू आर नॉट ए CEO यू आर काइंड ऑफ ए मालिक माने तमे गोटे बिजनेस चलौछ बहुत बड़ हे जाईची तमे किंतु बाहरिबनी सेटू तो whatever you want happens there in that company I'm not saying that is bad but ए जो CEO टर्म टा जतले यूज करू माने स्टार्टअप टर्म टा यूज करू मु कहबी एटा मोर परव्यू ऑफ स्टार्टअप रो डेफिनेशन so therefore BookingJini today is a startup because I don't know own 100% of the company there are 30% of the company is owned by investors another 10% of the companies is owned by all my many of my employees through employee stock options जदि बमे BookingJini को स्टार्टअप न के परिबा किंतु बिजनेस त कहि परिबा जदि आपण ना BookingJini को हम स्टार्टअप कहिबा मु कहूची अच्छा BookingJini को जतरा फर्स्ट करछि सेटा को हम स्टार्टअप कहि परिया जो फर्स्ट कंपनी टा जतले मु फॉर्म करिथिली सेटा को मु स्टार्टअप कहिबी जतरे BookingJini स्टार्ट करथिले इनिशियल डेज रे कोन चैलेंजेस देखिथिले well initial days रे हमरो right kind of talent engineering talent जोटा जतले मु डिसाइड करली जे हमके भुवनेश्वर रे करियर अछि right type of engineering talent was one of the key challenge काई ना एठी हमरो अदर सेल्स प्रोफेशनल ऑपरेशन प्रोफेशनल से माने there's no dearth of it in भुवनेश्वर but एटा गोटे चैलेंज थिला टिके स्केल कला परे फंड रेज वाज अनदर चैलेंज की जतले आमे बेंगलोर बा दिल्ली रे जाई की बा बॉम्बे रे जाई की जतले फंड रेज करथुलु सो केते बेले आमे गुडा नो सुनो काहे कि ना भुवनेश्वर रे आमे बॉम्बे रे बसिचु भुवनेश्वर कोठी हाउ कैन वी हैव कंट्रोल ओवर इट एंड ऑल eventually we raised our first fund from Singapore and Singapore Angels and an angel fund from Kolkata दी जण मिसी के हमको first round of fund देथिले but and then the CNBC Young Turk happened आमे गोटे इंडिया रे गोटे बहुत बड़ आजिर स्टार कोन सेटा शार्क टैंक इक्विवेलेंट सो देयर वाज समथिंग कॉल्ड CNBC Young Turk CNBC करे से प्रोग्राम टा स्टार्टअप ऊपर पाखा पाखी 400 स्टार्टअप को सिलेक्ट करके टॉप 5 जण स्टार्टअप को ते शोकेस करंती दिल्ली रे एंड 2018 रे वी वर द CNBC Young Turk सो सेठू आमे टिके
लाइमलाइट पाइलु बा स्पॉटलाइट पाइलु इन्वेस्टर मानकर आगरे and we got our first raise. But today again I will say how the scenario is changing. Ajira scenario hochi investor don't want to meet you actually. They want to have a Zoom call or Google Meet call, and on the call itself they are writing term sheets or सेटा स्टार्टअप पे ना सेटा BookingJini पे BookingJini पे BookingJini startup BookingJini पे ब्रांड हे गेलानी अपन कहि परियो ब्रांड हे गेलानी हां we can ट्रस्ट करछन अपन को ऊपर आ yes. So post covid I think this shift happened जोटी कि लोक आ चाहिले नि इन्वेस्टर चाहुनी जे मो पाखरे आसी मीट कर because everything can be validated online. आ गोटे माने किछिटा इन्वेस्टर ऑलरेडी हम संगे इन्वेस्ट करि सारलेनी तो नेक्स्ट इन्वेस्टर आसला बेल को गुडाय कंप्लायंस हे जाइछि ऑलरेडी. सो द ट्रस्ट विथ BookingJini as far as investment is concerned has significantly increased. So maybe बेले बेले हमको टर्न डाउन करबा को पड़े if we are raising funds. हमको धर 2 million फंड दरकार in terms of dollar, but we get term sheets of more than that. हमको मना करियो पड़े नहीं this is the round we want to close here. यदि BookingJini को अपन फ्यूचर रे देखिबा को चाहछन 10 years परे BookingJini कोठी थेबो. It's very difficult to predict 10 years परे कोन थिबो, but तथापि अपन के विजन of course BookingJini को 10 years मो BookingJini को नेक्स्ट 4 year भितरे हमें लिस्टिंग करबा को देखिया को चाहूछु. गोटे पब्लिक कंपनी हिसाब रे देखिया को चाहूछु. मे बी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज रे वी वांट टू बी लिस्टेड इन नेक्स्ट 4 years टाइम. सिबाशिश जी BookingJini होची गोटे SaaS कंपनी. फर्स्ट तो मैं जाने चाहिए भी SaaS कोन. इंटरेस्टिंग. आई थिंक SaaS होची गोटे एब्रिविएशन ऑफ ए वर्ड कॉल्ड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. तो आग काल रे कोन थिला कि माने एबे भी सेमती सॉफ्टवेयर अछि जोटे कि आपण सॉफ्टवेयर किनंती लाइसेंस दियंती एंड यू ओन दैट सॉफ्टवेयर, राइट. सो वर्तमान कोन हला इट्स लाइक ए यू रेंट दैट सॉफ्टवेयर. तमे जेति की यूज करूचो सॉफ्टवेयर को सेति की भड़ा दोचो सॉफ्टवेयर पे. तो द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड सर्वर से गुडा को किछि ओन करूनो तमे. तो आगुर कोन आमे गोटे सॉफ्टवेयर धर लगेबु, आमे गोटे सर्वर रखिबु, ता देरे से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हबो, समस्ते लैन रे यूज करिवे, ए भलिया थिले. वर्तमान सब किछि क्लाउड रे रहिले. आ मु टेलीफोन जेमती मासुक मास पेमेंट करे सेमती मासुक मास पेमेंट करबी मु. तो मोर बर्डन ऑफ पेमेंट भी नाही, राइट. सो तार टेक्नोलॉजिकली जदि कहबी गोटे घरे मल्टीपल लोक भड़ा नहीं चंती, मल्टी टेनेंसी. और आपण धर उबर यूज करूचंती आज डेट रे, माने आपण गाड़ी ओन करि नाहंती, रादर टैक्सी यूज करूचंती. सो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज दैट. एटा कहा पे मोस्ट रेलेवेंट होची स्मॉल मीडियम स्केल बिजनेस पे. सेति पे मोर होटल टारगेट होचंती स्मॉल मीडियम स्केल. धरंतु गोटे होटल अछि 100 रूम रो गोटे होटल, सी ए भलिया सॉफ्टवेयर टे तयारी करिया को ताकू मिनिमम 4-5 कोटी टंका रो खर्च हबो, राइट. ता बजेट रे सेटा फिट करिवनी. बट सेही सॉफ्टवेयर को यूज करिवा को हेले ताकू हुए तो वर्ष को 1,20,000 टंका देले सेही सॉफ्टवेयर रो एंटायर वैल्यू से पाई परिबो विदाउट ओनिंग दैट सॉफ्टवेयर. सो एई कांसेप्ट को SaaS को नाउ SaaS कंपनी जे तयारी करी जे जो धरंतु 5 कोटी टंका देखि खर्च करी सॉफ्टवेयर टा तयारी हला, मतलब सेईटा को इमेजिन करंतु 1000 लोक यूज करूचंती आ पे करूचंती. तो कंपनी रो भी प्रॉफिट हला, कंपनी रो भी लाभ हला जे मोर गोटे सॉफ्टवेयर को 1000 लोक यूज कर पारुचंती, आ यूजर रो भी सुविधा हला जे मु एते बड़ एते प्रोफाउंड सॉफ्टवेयर टा को एते सस्ता रे पाई के यूज करि पारुची. तो देबे SaaS रे स्टैटस देखिबा इंडिया रे कोन अछि बे. सो इंडिया इज एक्सट्रीमली ग्रेट इन SaaS. आई मीन आई थिंक चेन्नई बेस्ड जोहो कंपनी गोटे फर्स्ट आज टू 25 वर्ष आगुरु दे बिकेम पायोनियर इन SaaS. मोर मने अछि जते फर्स्ट टाइम मु यूएस जाइथिले आ सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट रो ओलेली सबुठु बड़ बिलबोर्ड गोटे लागिथिला 2010 मसे रे जोहो लिखा हिथिला, ZOHO खाली लिखा हिथिला, आ किछि नै. मु स्वप्नर भी भाबी पार नथि सेटा इंडिया रो कंपनी. ओनली व्हेन इन 2016 बेल को जतेले मु एई SaaS बिजनेस बा BookingJini विषय टिके भाबियो आरंभ कली, SaaS मल्टी टेनेंसी क्लाउड विषय भाबी गेले, सेते बेले मु जानिली जे
श्रीधर बेम्बू बोली कि जड़े लोक चेन्नई रो सी यार फाउंडर टुडे इट्स ए माने तार वैल्यूएशन नाही जेतु से माने फंड रेज करना है बट एस्टिमेटेड टू बी $30 billion कंपनी टुडे राइट सो इंडिया रे सेई टू नहीं कि ह्यूज इकोसिस्टम हेची हमर इंडिया रे इन टर्म्स ऑफ SaaS कंपनी बेसिकली चेन्नई इज नाउ नोन एज द SaaS कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देयर आर इनमरस ऑफ SaaS कंपनीज एंड डूइंग एक्सट्रीमली वेल सो हमर गोटे SaaS रो इकोसिस्टम टे तयारी ही जायछि जोथे कि SaaS रो बेसिकली हमको कोडर्स दरकार हुए इंजीनियर्स दरकार हुए हमको सेल्स SaaS रो टिपिकल सेल्स साइकिल थाए गोटे फनेल केमती मैनेज करा हुए तार कस्टमर सक्सेस पार्ट थाए तार रिटेंशन पार्ट थाए तो ये सबुथर गोटे स्पेशलाइजेशन तयारी ही गलानी पाखापाखि इंडिया रे तो एनीबडी हु वांट्स टू डू ए SaaS कंपनी इन इंडिया इट्स वेरी राइट टाइम टू डू ना गोटे लिंक्डइन रे गोटे पोस्ट आपनकर वायरल हितिला हायरिंग ऊपर BookingJini रा हायरिंग ऊपर कोन सेटा थिला हो आपण सेटा रे गोटे ओके सो सेटा थिला जे मु सडनली मु दिने बसथिली एंड आई वाज ट्राइंग टू सॉल्व ए चैलेंज विद इन द प्रोडक्ट ऑफ BookingJini एंड आई थॉट कि एटा कन्वेंशनल थिंकिंग रे हेई पारुनी कहीं मु देखिली जेतेबेले मु मो टीम संगे जाई कथा हुए माने नॉट लीडरशिप टीम ता तळ टीम संगे से मानको ए चैलेंज ता जेते कथा हुए तांकर कन्वेंशनल थिंकिंग रे हमें डूज एंड डोंट्स रे हम मुंडो पसि जाई तो मु भाबिली इज देयर ए आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम ए माइंड व्हिच इज नॉट कंडीशनड आई कैन से नॉट एजुकेटेड नॉट कंडीशनड जे कि ट्रेडिशनल बा माने हमर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम रे जाई नाही सी कोन ए प्रॉब्लम टा को सॉल्व कर परिबो एंड मो संगे सेमती जने पिला हम ऑफिस रे काम करंती जे कि सेमती अनकन्वेंशनल ही इज हेडिंग माय एआई डिवीजन टुडे एंड ही इज नॉट इवन रिटन हिज 10th क्लास एग्जाम राइट सो ताको मु गोटे वेरी अनकन्वेंशनल जगह रे गोटे रेस्टोरेंट रे वेटर थिला ताको मीट करथिले आज टू 8 वर्ष आगुरु and today he has grown in the system as a head of AI I mean throw him any challenge and he's with the answer so say through back of the mind age insert thila au mu bhabili je can I hire a small team किंतु मुई टिके ये इंटरप्ट करिवे आपण कहली 10th पास करना थिले आपण ताको हेड ऑफ द एआई हे गेले सिस्टर आपण केमिति ताको चूज करले कि ए हे ओके एटा गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट विल ऑलवेज बी हैप्पी टू शेयर दिस स्टोरी मु केबे थकी भी ने स्टोरी कहइबा को सेठी कोन माने मु गोटे आमे गोटे इन्वेस्टर पाकू मीट करिया को जाइथिलु कलकत्ता एंड गोटे कॉफी शॉप रे आई वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि मु से इन्वेस्टर को देखा करबी आ मु मो लैपटॉप खोली किसी गोटे डेटा काम करूथले एंड से पिलाटी आसी कि मो पाखरे माने कॉफी देई कि से गलानी सेठू से कोणे कोणे चाहूता लैपटॉप स्क्रीन को कि कौन करूची काइंड ऑफ ही वाज क्यूरियस एंड आई एम आल्सो क्यूरियस लाइक मते भी भल लगे स्ट्रेंजर के सामने कथा हेबा पे फ्रेंडशिप करिया पे तो मु तक पचारले आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कोन देखुछु कोन माने डू यू वांट टू सी द लैपटॉप मोर और समथिंग कहला नाही मु देखुछु टिके मु तक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पर तू कोन जानिछु कंप्यूटर विषय रे बा सॉफ्टवेयर विषय से कहला मु वेबसाइट बने दिए मु ब्लॉग तयारी कर दिए मु मोर सेते बेले गोटे डिजाइनर दरकार थिले तो मु कहली तू डिजाइन करि परिबु ए जो फोटोशॉप रे जो डिजाइन करि परिबु से कहला हां कर देबी मु कहली व्हाई डोंट यू कम आई हैव ए गुड जॉब माने एमती भरबली कथा है कि भरबली कथा है कि किछि फॉर्मल इंटरव्यू नाही नाही आई जस्ट मोर इंस्टिंक्ट किछि तार डेमो भी देखिनी सो इंस्टिंक्टली मु कहली जे तू भुवनेश्वर आस एटा हम एड्रेस एंड पहुंच आमे काम करियो एंड सी भी लीप ऑफ फेथ नहीं गला सी भी मत लागु 3 दिन 4 दिन भीतर से पहुंची गला भुवनेश्वर में ऑफिस रे एंड दैट वाज एक्साइटिंग देन ही स्टार्टेड हिज जर्नी बहुत माने यंग सेते बेले से मो मतरे 18-19 वर्षर बयस तक थिला एंड ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वेंट टू डिजाइन एंड ऑल जहाँ भी मोर छोट छोट चैलेंजेस रहे सी निजे निजे सेल्फ लर्निंग करके सीखी जाए यूट्यूब वीडियो देखिबो को ब्लॉग पढ़िबो एमती करके निजे निजे सीखी जिवो एंड ही विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम सो धीरे धीरे ये लैडर रे ग्रो करू 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 नाउ एंटायर एआई रो इनिशिएटिव जहाँ भी BookingJini रे चली ची तार ही सुपरविजन रे चली ची सो बहुत बड़ा जिंस सर्टिफिकेट नाही किछि नाही एब्सोल्युटली एंड देयर आपण ए थिंकिंग प्रोसेस पे रखी छथि या आई डोंट थिंक ही इज अलोन देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट सेल पिलेटा को मु जानि छि बोली सो मो इनिशिएटिव थिला कैन देयर बी
20 more people like him in my organization, सी जदि गोटे पिला एमती इम्पैक्ट करि परिबो, कैन 20 अदर पीपल मेक ए इम्पैक्ट? आमे पहुंची पारो नांती तांको पाखे। हां मु पहुंची पारुनी, सेइत पे से पोस्ट मु लिंक्डइन रे करथिले कि तमे जदि रिजल्ट आस्तिला प्राय पिला निजे ही पई अप्लाई करूथिले, दोज वर रिजेक्ट बिकॉज़ से माने लिंक्डइन रे अथिले। मोर मेन क्राइटेरिया थिबो जे तांकर सर्टिफिकेट नथिबो कि लिंक्डइन रे भी प्रोफाइल नथिबो, बट वी हैव गॉट अराउंड 12 to 15 such recommendations. आमे ता ऊपर काम करू छु, काहे एटा बहुत रिसेंट हे छी, ता ऊपर काम करू छु। आई थिंक वी वुड हायर ए स्मॉल टीम फ्रॉम देयर। बहुत बढ़िया कथा आपण कहले कि सर्टिफिकेट दरकार नै, आपण तांको अपॉइंट करले। आपण के हिसाब रे सर्टिफिकेट सेते इंपोर्टेंट नुहो गोटे हायरिंग कल्चर रे? सी इट डिपेंड्स, लाइक मो भलिया एकनी इनोवेशन स्टार्टअप रे आई थिंक वेयर आई एम चैलेंजिंग द स्टेटस को, माने जहा चाली आसी मु सेटा को कहूची जे याठू अलगा कोन हे परिबो। मते लागुची जे एठी कन्वेंशनल एजुकेशन काम दबो, राइट? मु गुटे स्टार्टअप कंपनी निजे करूची एंड एटा को समस्ते कहबे एटा गुटे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, बट मु निजे गुटे इंजीनियर नो। सो प्रोबेबली मु इंजीनियर हेइथिले मोर बायसनेस आस्थांता इंजीनियरिंग बा डेवलपमेंट प्रति, राइट? सो सेइत पे मु सेइथरो आछी जे हुए तो कन्वेंशनल एजुकेशन रो ए भलिया डिस्ट्रप्शन आसीबो नै। बड़ बड़ स्टॉलवर्ड्स माने से माने मु ना नबा को चाहुनी, बट आपण जानि जंदी धीरू भाई अंबानी होंतु कि स्टीव जॉब्स होंतु, ए माने सब गुडाय हाईली सक्सेसफुल लोक ड्रॉप आउट्स, राइट? पीटर थिल निजे गोटे माने स्कॉलरशिप रन करंती फॉर ओनली ड्रॉप आउट। थिल फाउंडेशन जोटा they only fund to people who are dropouts. आमर ओडिशा रो जने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जे कि गुरगांव रे तांकर बड़ एंटरप्राइज करचंती ओयो रूम्स, आपण सुनिथिबे, रितेश अग्रवाल। सी पीटर थिल रो जने माने पीटर थिल फाउंडेशन रो जोटे बेनिफैक्टर, राइट? सो बिकॉज़ ही वाज ड्रॉप्ड आउट, he didn't had education beyond I think intermediate, right? So this is what I believe कि ए भलिया पिला भी given a right condition and environment they can give wonderful results. जे स्केल थबो हमें किछि भी करि परिबा, किंतु हमको सेति की अपॉर्चुनिटीज मिलिबा दरकार। यस, अपॉर्चुनिटी भी मिलिबा दरकार, बा हमको नबा को पड़िबो, माने हमको अपॉर्चुनिटी टा ग्रैब करिया पड़िबो। आई थिंक गुडाए बुक्स बा गुडाए बायोग्राफी आपण सक्सेसफुल पीपल रो लोक कर देखिबे, अपॉर्चुनिटी तांक पाको आसी नथिला, तांक पाको रादर बड़ बड़ फेल्युअर आस्थिला। हिस्टोरिकली आपण देखिबे जदी सबु बड़ फेल्युअर परे गोटे बड़ अपॉर्चुनिटी आछि। मु आपण को हाईली रेकमेंड करिबी, गोटे बहुत पुराना बही अछि 1936 रे लेखा आइथिला, थिंक एंड ग्रो रिच। सेतिरे 13 टा प्रिंसिपल देछि केमिति आपण माने you can just think and grow rich. Of course action भी करिया को पड़िबो, but सेथिरे भी clearly लेखुची से जुगरे that after every big failure that happens in your life there is a big success that waits. But एई opportunity टाकू हमरो 95% mindset says कि मु failure हे जाई छि, तेनु आउ ट्राई करिबिनी, मु opportunity को गेज करि परिबिनी। So opportunity दिया हुए नि कोनोसी हाई सक्सेसफुल पीपल opportunity को नहीं की है ना, opportunity create करिसेंती, but mediocre people like मो पेरेंट्स माने जहा थिले, जो आपण जो आरंभ कले कि मिडिल क्लास फैमिली रु तू आसचू एंड ऑल दिस थिंग। सो सेमान को पई अपॉर्चुनिटी सरकार तयारी करके दउथुला, बा गोटे आ गोटे बड़ इंडस्ट्री वाला तयारी करके दउथुला। धर टाटा स्टील तयारी कला एंड दे क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, बट जे बहुत बड़ करिया को चाहूची ताले कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी हबनी। So he has to create his own opportunity. किंतु एठी गोटे कथा कहबी, किछि लोकंगर किछि जगह रे एक्सीलेंस थाए। हां जेमते आपण कहिले तांकर एआई ऊपर थिला, एबे से एआई हेड अछंती, से चाहनती मो गोटे कंपनी करबी किबा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करबी, किंतु मु सेही जगह रे जाई के जॉब करबी, मो काम करबी, काम रे एक्सीलेंस आनेबी। सेठी किंतु आमे जदी देखबा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम स्किल ऊपर किछि करू नाही, जदी एजुकेशन नाही
आ मोर स्किल मु बहुत भलो काम करि परिबे तांको अपॉर्चुनिटी कोन मिलेबो एटलीस्ट बुकिंग जिनी तो एज Opportunity. ओपन आर्म्स रे आपनकर पॉडकास्ट माध्यम रे मु जणिया को चाहिबी जे जदी तम पाखरे सर्टिफिकेट नाही ऑफ कोर्स आमे सर्टिफिकेट वाला को भी नौचू भलो इंटरव्यू नै कि हमर रिगरस प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू एंड सिलेक्शन अछि बट जहार सर्टिफिकेट नाही आई रियली वांट टू लुक फॉरवर्ड टू टॉक टू देम एंड जदी से कैपेबल अछि वी विल नॉट हेजिटेट टू टेक इन आवर सिस्टम गोटे सुंदर माइंडसेट एक्चुअली मैं देखिली कि सर्टिफिकेट नाही किंतु आपण रिस्क नै कि नौचो आगे आगे शिवाशिष जी आमे जे देखिबा आपण कोतले कि ओडिसा को सेतेबेले लोक जानि नथिले किंतु एबे ओडिसा को लोक जानिले ओडिसा स्टार्टअप कल्चर रे कोट ना कोठी ता ग्राफ टिके रेज हे एब्सोल्युटली अनडाउटेबली जदी आपण को हिसाब रे आपण कोन देखुचंती ओडिसा रे को बिजनेस एबे बूम करबा को जाउची सी आई मीन टुडे आज इंटरनेट दुनिया रे बा मोबाइल दुनिया रे आई कैन से मोर प्रिसाइसली एवरीथिंग इज पॉसिबल राइट यू नीड ए राइट इंटेंट बा हमर नियत रा ठीक होबार अछि तो मु ई क्वेश्चन टा को दी रकम देखिबी गोटे होची ओडिसा एज ए मार्केट मु कोन करि परिबी बा ओडिसा रे रही कि पूरा दुनिया पे कोन करि परिबी सो ओडिसा एज ए मार्केट को मु जदी देखिबी एग्री बिजनेस कहिना हमर एग्रीकल्चर डोमिनेंस बिजनेस टूरिज्म डोमिनेट बिजनेस आई मीन इकोनॉमी एंड अनदर इज जेहेतु इथरे गोटे अंडर सर्व्ड मार्केट तो हेल्थ केयर इज आल्सो ए लार्ज लाइक टुडे one of my senior has done a company called CureWay जे कि rural most area रे भी through telemedicine through telephone and through remotely they can take care of the medical health care right so these kind of business are flourishing so with a cheapest price जोटा गोटे super specialist को धर आपण 1500 टका देई कि घंटा कर कंसल्टेंसी नेबे सेटा को से नै आसी परिबो 150 टका को right and the same kind of quality so technology द्वारा एटा संभव now micro financing एगुडा भी underserved market पे बहुत बढ़िया opportunities then we are also talking about agri-tech so आमे देखुछु ओडिसा बढ़िया जगह रे जोथि कि lands are good and fertile so lot of experimenting are going on in terms of agriculture and produce farm to fork एगुडा ए सब कांसेप्ट गुडा को नुआ आसुचे तो एटा होचे ओडिसा पर्सपेक्टिव रे हमें कोन करि परिबे बट लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट टेक्नोलॉजिकली हमें किछि भी करि परिबा ओडिसा रे रहि कि फॉर एग्जांपल मु बुकिंग जिनी करूची मु गोटे निजे इंजीनियर नुह टेक्नोलॉजी कंपनी माय आई वुड से ओडिसा रे भी मोर क्लाइंट्स अछंती बट टोटल क्लाइंटेल रो परसेंटेज ऑफ ओडिसा इज मे बी लेस देन 1% of the entire clientele in Odisha I mean global client ro गोटे decimal percentage Odisha re market so tenu I believe strongly that we are limited by our imagination हमको भाबिबा को ही देरी अछि and the technology जो रकम बढ़ुलानी आजिकली we can possibility is anything but these are major things that I can share with you किंतु एबे जदि हम देखिबा यूथ मानकर भी टिके जॉब एस्पिरेशंस किबा निजर एस्पिरेशन करियर एस्पिरेशन कहबे टिके सेगमेंट चेंज हो जाय आगुर बहुत जॉब ओरिएंटेड थिले एबे चाहू छन हम निजर किछि करिवो निजर गोटे बिजनेस डेवलप करिवो जदि जने जरा बिजनेस बैकग्राउंड अछि तापय हुई तो गोटे रोड मैप अछि से जाई परिवो कि जा बाकी किछि बिजनेस बैकग्राउंड नाही जेमते मु स्टार्टिंग रो कहितली जे मिडिल क्लास फैमिली रो किबा बिलो मिडिल क्लास फैमिली रो आछथि तांको पई जदि आपण गोटे रोड मैप कहिबे गोटे जेनरिक सो सी आई थिंक गोटे बिजनेस अगेन मु सेठी के आसी जे गोटे लाइफस्टाइल बिजनेस जदि करिवार अछि आजिकली ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल बिजनेस आई थिंक आपण वाओ मोमो कथा सुनिथिबे वाओ मोमो गोटे कलकत्ता बेस्ड कंपनी आई एम ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन द फाउंडर सीए गोटे गोटे मोमो स्टोर रु आरंभ करिकि वर्तमान आपण इंडिया रे जुआडे भी गले गोटे एयरपोर्ट रे हो कि जोठी ले वाओ मोमो स्टोर ते पाइबे सो इट इज सेही समय रे सेही परिस्थिति रे भी आउ हजारटा मोमो दुकान खोली थिबे जो माने कि सेठी रहि जाई छथि सो it is again how big you think about your business that's how you grow तो ओडिसा रे माने मु कहिबी मोर गोटे प्लेबुक जदि देखिबा फर्स्ट का संगे गोटे काम करबा सिखिबा माने जनरली कहिबा देयर आर एक्सेप्शंस टू इट कि डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप को जाई परिबा बिजनेस को बट गोटे
ଭଲ ଲୋକ ପାଖରେ କାମ କରିବେ ମାନେ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ଲିଡର ଅର୍ ଏ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍योर लेट अस वर्क अंडर ए एंटरप्रेन्योर और अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स इन ओडिशा गोटे स्टार्टअप रे जाई काम करिवे कोन होउची देखिबा सेठी तो मे बी दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट देन टिके बड़ भाबिबा को हेले हमकु टिके पढिबा को पड़िबो मु गोटे स्ट्रांग एडवोकेट बही पढिबार बही को बही ना बायोग्राफीज बा सेल्फ हेल्प बुक्स देयर आर number of biographies you can read and learn from them that आपण जानी परिबे सी केबे जहा एंड रे हेले तांकर इनिशियल डेज रे तार किछि भनक भी नथिला जोटा सी अचीव करि पारले सो एई भलिया बही पढिबा द्वारा आपनकर प्रॉक्सिमिटी भी चेंज होबा आपनकर माइंड सेट चेंज होबा एंड देन यू आल्सो फील लाइक यू नो इफ दे कैन डू व्हाई नॉट आई राइट सो बही पढिबाटा बहुत इंपोर्टेंट देन ट्रैवल करिवे सो आमे भुवनेश्वर बा ओडिसा रे रही कि गोटे इकोसिस्टम बा गोटे एनवायरनमेंट को आमे सबले देखुछु वी शुड गो टू प्लेसेस लाइक बॉम्बे बैंगलोर वी शुड आई मीन आई एम नॉट सेइंग गो एंड सेटल देयर एंड यू नो फॉरएवर बी देयर जेमति हमरो गुडे मझिरे करूथुले भी हमरो गुडे यंगस्टर्स बट गो एंड सी व्हाट्स हैपनिंग देन ओनली यू कैन यू नो कम बैक एंड से कि हे if they can do we also can do there are lot of example which I know also जो माने कि स्टार्टअप फाउंडर हमर भुवनेश्वर रे बा ओडिसा रे जो माने कि चाकरी करी कि आसी कि निजर बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप्स करि पार तो फर्स्ट थिंग होची गोटे स्टार्टअप रे जाई देखो केमती काम करूछंती एंड ऑल बिकॉज़ स्टार्टअप टा बाहरु बहुत ग्लैमरस दिसे बाहरु दिसे एठी माने ग्लैमरस ग्रो करूची फंड उठाउची मैगजीन रे ब्लॉग भारुची बा पॉडकास्ट तकरे होची बट इट इज रियल स्ट्रगल ओवरनाइट सक्सेस आमे जहा देखु स्टार्टअप रो इज एक्चुअली एटलीस्ट 8 ईयर टू 10 ईयर ऑफ हार्ड वर्क जो सक्सेस टा आमे आज देखुचु ता पछरे 8-10 वर्ष रो हार्ड वर्क रहिची ही रहिची तेरे दुई राय नाही जब सो एई जिंसो कांसेप्ट गुडा को जदी बुझीबा and today's youth is living on a instant gratification world 10 मिनिट रे जदी हमर चिप्स पैकेट आसी पारुची बा फूड आसी पारुची तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रे बंचिछु बट सक्सेस इज नॉट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इट्स अ डिलेड ग्रेटिफिकेशन सो सेही जिंसटा को हमको जानिबा को पड़िबो फॉर द टुडेज यूथ एंड हैव टू एग्रेसिवली बीइंग पेशेंट वेट फॉर इट स्लग फॉर इट ए स्लग व्हाट स्मार्ट रो अपोजिट तो स्लगिंग करिया को पड़िबो सो एगुडा सब आर ए डीएनए ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर आई कैन से जदी जने बिजनेस स्टार्ट करछ गोटे फेलियर से देखि दोचे फेलियर देखि दोचे तापरे तार टेक कोन रहगा दरकार आई थिंक मु पर्सनली धर माने जस्ट टू गिव यू ए परसेंटाइल नंबर लाइक सपोज 100 टा जिंस करिथिबी मु 60 रु 70 जिंस रे फेल हेछि बट सेटा ही माइंडसेट सो गोटे सक्सेसफुल पीपल देखिबो सब बेले मु 100 टा जिंस कली आउ 70 टा जिंस रे फेल कली किंतु अपोजिट साइड रे कोन रहछि 30 टा सक्सेस हेछि फेलियर केमती देखिबो ना मु 70 टा फेल हेली तेनु आउ मु ट्राई करिबिनी किंतु सक्सेसफुल लोक देखिबो कोन मु 30 टा रे सक्सेस करिछि तेनु मु जदी 1000 टा एमती ट्राई करिवि ताले 300 टा सक्सेस हबो तो यही माइंडसेट टा होची जमा 5% लोकंकर यही माइंडसेट हे परिबो तेनु फेलियर डेफिनेटली हबो आई मीन एवरी डे वी फेस फेलियर एवरी मंथ वी फेस फेलियर एवरी डे वी बट इट इज लाइक यू लूज लॉट ऑफ बैटल्स बट वार यू विन राइट इट इज समथिंग लाइक दैट सो जने बढ़िया की कहिथिले ए जो सक्सेस रो डेफिनेशन इज सक्सेस इज मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर without losing your enthusiasm निजर जो enthusiasm बा उत्साह ताको लूज न करी की फेलियर टू फेलियर मूव करिवाटा को ही सक्सेस कहंती बहुत बढ़िया कथा कहले जे भी यूथ देखुथिबे जेमति कहले बे इम्पेशेंट हे गेले यूथ हमको सब जिंस इंस्टेंट दरकार तो पेशेंट रहयो पड़िबा सक्सेस पय आपन बहुत सुंदर सुंदर कथा कहले लाइक बुक पढिबा दरकार पेशेंट हवा दरकार सक्सेस पय जति हम गोटे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डेली हैबिट्स जानिबा को चाहिबो आपनकर कोन थाय so that's interesting I think first thing I start my day at
by waking up very early, बहुत जल्दी उठे मु 5टा ରୁ 5:30 ଭିତରେ उठी जाए, and then I straight away go for a long walk. That walk is a meditation for me. It's a nature walk. गोटे ट्रेल अच्छी से walk करे. एटा गोटे मोर habit हे जाइछि माने since long. तापरे सेकेंड जिंस होची बही, लाइक मासुको मु एटलीस्ट 4-5टा बही पढ़े. That gives me a lot of energy, lot of perspective, lot of insights which I build in my organization and in the team, right? So and traveling. So ये तीनटा जिंस बहुत मुख्य ingredient for a successful person. Repeat करी दोची, taking care of her health, बही पढ़िबा और travel करिबा. मु देखी सब बायोग्राफी जेकोसी बायोग्राफी आप पढ़ु सब सक्सेसफुल लोकंकर ये तीनटा हैबिट डेफिनेटली अच्छी. तो आइदर सक्सेसफुल लोकंकर ये हैबिट अच्छी ना सक्सेसफुल हबा पे ये हैबिट करिया सो यू कैन थिंक अबाउट इट. सो ये तीनटा मोर भी रूटीन हो जाइए. हेल्दी खाइबा टिके तापरे डाइट ऊपर कॉन्शियस. मु गोटे जिंस बुकिंग जिने आरंभ करबा आगु मोर ओजन पाखा पाखी 110 किलो थिला. So I was very conscious weight katha nahi ki. Then I learned a lot of things through my mentors and certain important people. And today, you know, I've gone zero sugar kind of. So though I had, by God's grace, I do not have any lifestyle diseases, but that's amazing. My productivity has super increased from mornings 5:30 to 11 p.m. like super active, and there's no downside of anything. And I sleep by 11-12 parjanta we sleep well. So these are certain things that I regularly do, and I keep on upgrading myself. I learn new technology, new things that are happening. So there are a lot of contents today that are available apart from books I am talking about. So I spend a lot of time with this. यंगस्टर को पाई मु या छड़ा आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस कहबा चाहूँगी. मोर गोटे इंपोर्टेंट थियोरी होची यू आर द एवरेज ऑफ योर प्रॉक्सिमिटी. या माने होची तमे तम 5 जण टॉप लोकन को बाछ जहां संगे तमे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करूछ, और तमे धीरे धीरे तार ही एवरेज हे जीवो, राइट? एंड दिस इज सो एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ योर बिहेवियर, in terms of your success. कौन अच्छो तमे तम साइकोलॉजी तम मेंटालिटी, इवन टू योर बैंक बैलेंस. आपण निजे ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखि परिबे. मु एई 4 जण को लोकन संगे मैक्सिमम टाइम मोर जाउछ. गोटे मास कर धरंतु आपण गोटे वर्षर देखिले एई लोकन संगे मोर टाइम जाउची. आ आपण तांको बैंक अकाउंट रो एवरेज बाहर करंतु आ निजो बैंक अकाउंट रो एवरेज बाहर करंतु एवरेज. सो this is the profound formula you can get, that spend time with those people who are successful more than you. And semane तुमको किंतु टाइम देबेनी. तुमको किए टाइम देबे ने तमरो जे एवरेज रे तळे अछंती. They will love to spend time with you because they are deriving from you. Now the point is, from whom are you deriving, and who are these physical people you are meeting every day or every week, from where you can derive and increase your average. So आजिकली जो यंगस्टर they love to spend hang around friendship जो WhatsApp university हम कहूची सांग लाइफ टाइम सांग and all that. I don't think extremely successful people, I'm not saying about me, but extremely successful people will have very less friends, and they will be spending time with people who will give them value. Right? So this is very important. जदि हमें अर्ली यूथ एज रु हमें जानी जिबा ए कांसेप्ट टाकू कि मु तारी संगे मु जो जहा हबा को चाहूची तांकरी संगे मु टाइम स्पेंड करिवि, मते लागुची तुमको किछ करिया को हबन परिवन तुम हेई जीवो सेटा ड्रिवन फोर्स भाबरे काम करियो. जेंति आपन को जर्नी भी हमें सेमिति ही कहि परिबा. लाइक आपन एथि थिले जते मुंबई गले से एब्सोल्युटली आई एम ए लाइव एग्जांपल ऑफ दैट. सो मु स्ट्रांगली बिलीव करे कि मु आईपीओ टे करि परिबि कि आज डेट रे मु एटलिस्ट 4 जण लोकन को जानी जो मैंने आईपीओ कर सारी आउ फोन टे जदि करी से माने मो फोन उठे कि शिवाशिष कौन कुह कहे आउ मो ना नहीं कि आपण जदि तांको पाखु जिबे एटलिस्ट बसे कि आपण कप ऑफ कॉफी देबे. सो आई नो दोस पीपल, देयरफॉर
my confidence of building BookingJini into another IPO is very strong. I know at least 20, not only know, I have met them and I can go and meet them in my challenges. I can ask them for suggestions during my any challenges I face, and they have built already unicorns. So ତେଣୁ ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ average ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର average ରେ ଅଛି ତ the more I spend time and ସେମାନଙ୍କ time will be precious. ସେମାନେ ହଠାତ୍ କି ତମକୁ time ଦେବେନି. ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ମିଶୁ ଯୋଉମାନେ available ଅଛନ୍ତି. ଯୋଉମାନେ available ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁ ତାର ଗର୍ବ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆମକୁ time ଦଉନି. But ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ କ'ଣ କରିକି ତମକୁ ମାନେ that is the kalakari you have to do to ensure that you spend more time with them. ଯେମିତି BookingJini କଥା କହିଲେ ଏବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏବେ AI ର ଜମାନା ଚାଲିଛି କହିଲେ ଚଳିବ. BookingJini AI କୁ କେମିତି ଦେଖେ? BookingJini embraces AI like day one ରୁ ଆମର AI initiatives ଥିଲା like ଆମେ ଯେତେବେଳେ AI was not generalized right ଏବେ ଆମେ chat GPT ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ତ chat GPT ହେଲା ଦିନଠୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ AI is now it is inclusive, it is no more exclusive. AI ଆଗରୁ ଖାଲି business houses ମାନେ use କରୁଥିଲେ so therefore it was highly inclusive. Exclusion ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ chat GPT ରକମ models ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ everybody now use AI. ତା ଆଗରୁ ବି ଆମେ chatbot ଗୋଟେ ଲିସା ବୋଲି ଗୋଟେ product ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଯୋଉଟା କି lexical integrated syntax analyzer. ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ନା କହିଲି ବିକି ଯୋଉ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଲା ସିଏ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲା ସେଟାକୁ ସେତେବେଳେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ 2018 ସେତେବେଳେ AI ର ଏତେ ବଜ୍ ନଥିଲା ବଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଟବଟ୍ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଯୋଉଟା କି AI କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଥିଲା ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ଟୁଡେ ୱିଥ୍ ସୋ ମେନି ମଡେଲ୍ସ ଆଭେଲେବଲ୍ ଲାଇକ୍ DeepSeek Perplexity ଲାଇକ୍ chat GPT ଆମେ AI ର ପୁରା ଲେୟର ବନେଇ ସାରିଲୁଣି ମାନେ ଟୁଡେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୱିଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଗୁଡାକୁ ଏଜ ଏ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ ମାନେ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ସ ଦଉଥିଲୁ ସେ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିକି ରେକର୍ଡସ୍ ଗୁଡା ଡେଟାବେସ୍ ରେ ରଖୁଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ରିଟ୍ରିଭ୍ କରିକି ଭେରିୟସ୍ ରିପୋର୍ଟସ୍ ରେ ବା ୟୁସେଜ ରେ କରୁଥିଲୁ AI ଏଇ ଯୋଉ ଲେୟର୍ସ ଗୁଡାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା AI କହୁଛି through agents it is like you don't have to have a structured database, you don't have to have structured API linkage, you don't have to have a so called ଆପଣ ୟୁଜ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ chat GPT ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଲି ଡାୟଲଗ ଗୋଟେ chat box ଟେ but it's so powerful right so BookingJini ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ AI is almost 50% things are been done by AI and I see within 1 year time we will move to almost 90% thing being done by AIs. थैंक यू सो मच शिवाशिष जी आपण एते समय बाहर करके ठीक आसिले बहुत सुंदर सुंदर कथा कहले हम यूथ मानक पई जे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करबा को चाहछंती आपनकर BookingJini जर्नी कथा कहले जोटा कि बहुत इंस्पायरिंग थिला थैंक यू सो मच एते मूल्यवान समय आपन को हमको देथिवार थैंक यू सो मच.